Okay, people, a very good evening. Let us start. Let me just do the settings. So this is where I am. Hi guys, a very good evening to all of you. And why are we here? Well, we already made it clear. पाइथन सर्टिफिकेशन एक कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पाइथन के सारे बैचेस में या जहां पे भी मैं ट्रेनिंग्स ले रहा हूँ वहां पे एक कॉमन क्वेश्चन, सर कौन सा सर्टिफिकेट लेना है, क्या लेना है, कहाँ से करें. So, with all these questions coming into picture, one basic question, answer. Which one? अब पहला बात तो यहां से शुरू होता है कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सर क्या सर्टिफिकेशन करे, सर खाली प्रोजेक्ट वर्क से नहीं चलेगा. अब इसके आंसर एक सिंपल तरीके से नहीं दे पाऊंगा, इसके बहुत सारे बेसिक आंसर्स होंगे डिपेंडिंग ऑन एवरी केस, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर. नाउ सबसे पहला बात अगर करें, सबसे बेसिक बात मैं कहूं, क्या सर्टिफिकेशन मस्ट है. If you are thinking about job, masters, or thinking about improving your profile, then yes, I would strongly recommend you that certification is must, whether it can be a Microsoft certificate or can be Python certificate. So पाइथन और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट अलग अलग चीज है. इट्स अ बेसिकली बॉडी विच वुड वर्क विथ यू फॉर सर्टिफिकेशन. दोनों इंटरनेशनल बॉडीज हैं एंड यू कैन एक्चुअली वर्क विद आइदर ऑफ देम. हाँ, बट इसके अलावा इफ यू गूगल ऑन नेट पाइथन सर्टिफिकेशन, देयर विल बी मोर देन 83 different categories and people, or rather institutes, providing one or the other certification. So these are the best 5 which are currently used in industry. मैं उसमें से सबसे पहले पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूंगा बिकॉज स्टूडेंट लेवल में हमें इसे सबसे ज्यादा काम में लाना पड़ेगा. या एज अ प्रोफेशनल, दैट्स द फर्स्ट सर्टिफिकेट यू हैव टू गो थ्रू फॉर डूइंग एनीथिंग अहेड and become a Python certified professional programmer. So let us try to see what we have and let us try to see how we would go with it. तो basic बात जहां से शुरू करूं, let me just help you off with the PPT itself. जो मैं बात करने वाला हूं आज के इसमें, दैट वुड बी सेट ऑफ 5 डिफरेंट सर्टिफिकेशंस व्हिच यू गाइस कैन सी राइट नाउ. दैट इंक्लूड्स PCEP, PCAP, that's basically entry level professional, then associate programmer, professional programmer, and then going for the 2 certification. And then there is a Microsoft certificate which we are also talking about today. So sir, these are from one governing body and this is by Microsoft itself. Cost, as I said, very easily gettable in dollars. So their dollars are costly. This is not costly, and this is basic one certificate which I want everybody to have. So, sir, are this certificate different? Are they gonna talk about different things? Well, they are not different, I would say, but yes, definitely one thing remains, that which this certificate, they carry different syllabus. They have different weightage, they have different number of question and time. So can we see that? Yes, definitely we can work it out. So if you want to understand how and what they would work into, let me help you out. Now, पहली बात अगर कही जाए तो पाइथन इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द थिंग जिसके सर्टिफिकेशंस आज इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चल रहे हैं. So the most basic certificate you have to go through is PCEP. इसके भी 2 वर्जन है. फर्स्ट वर्जन is supposed to end in June. The second version will now take over. यानी कि इन्होंने थोड़ा अपग्रेड किया है सिलेबस में. Syllabus and other thing also I'll be discussing. So yes, this is what I want every professional or a student to start with. Why? Because that's a basic certificate जो आपको चाहिए. Sir, difficult है, easy है? Well, आगे देखते हैं. Stay tuned. Currently बात करते हैं. Once this is done, then you can talk about associate and professional 2 programs to work with, 2 certifications to work with. But हाँ, कोई भी सर्टिफिकेट आप स्किप नहीं कर सकते. दैट मीन्स पहले आपको एंट्री लेवल में जाना पड़ेगा, देन एसोसिएट लेवल, एंड देन यू कैन गो टू प्रोफेशनल लेवल. दैट इज हाउ द सर्टिफिकेट्स आर डिजाइन. ओके सर, उससे पहले जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग फ्री टू यूज मटेरियल है which will train yourself or which will train you in terms of Python programming and Python certification related entries, datas, MCQs. इसके बाद आप ये सर्टिफिकेशन यानी PCEP अपीयर कर सकते हो. सर इनके सिलेबस, ओके, लेट मी टॉक विथ रेफरेंस टू सिलेबस. एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ, यू विल हैव डिफरेंट सर्टिफिकेशन. मेरा मेजर कंसंट्रेशन स्टूडेंट लेवल पे PCE पे होगा. एज आई सेड, इट्स अ एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड ये क्या है.
कैसे चल रहा है, किस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके सेक्शन में दैट इज अ वेरी बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी कि एंट्री लेवल है, ऑब्वियस है। स्टूडेंट या प्रोफेशनल जो पाइथन में अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं, दैट इज अ मस्ट एग्जाम or certification which you will go through. So basically we have fundamentals जो 18% होगा, 29% would be on loops. That means your if, your loop, or for, while, if, else, if, etc., etc. Then they will be concentrating on data structures that includes your set, list, tuple, dictionary. And then they will be concentrating on functions and exceptions. This is exactly what we are going through. This is exactly what we go through when we say core Python modules of our training. तो ये वही ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है जो कोर पाइथन में हम लोग कंडक्ट करते हैं, यानी कि ये चीज आपको प्रिपेयर करवाता है पीसीईपी एग्जामिनेशन के लिए। तो सर इस एग्जामिनेशन के बारे में जरा डिटेल बोलिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पास किए बिना आप आगे का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं कर पाओगे। तो आई विल बी गोइंग मोर इन डिटेल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, सो लेट मी हेल्प यू ऑफ। Now, PCEP, as we said, Certified Entry Level Python Programmer. That is a first level programming to talk about. There are two certifications of it, 1 and 2. Do not take one now because it's going to be discontinued soon. Just to work it out, suppose sir मुझे देखना है, I'll just take you to the website straight away, which I'll get more information for you guys. So if you go through with this, let's see, this is PCEP certification, directly मैंने website से operate किया है. So if you go through, there are a lot of useful information if you want to go through. This is where I want you guys to concentrate on right now. As you can see, it's examination. You have two things. One option you have is working with 02, which is currently active. And as you can see very clearly, retiring December 31, 2022. बंद हो रहा है, तो आई वोंट। इसी वजह से बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो ये काफी कम कॉस्ट में भेज रहे हैं, दैट मींस एज लेस एज 499 एंड 500 आई हैव सीन, बट आई वुड एडवाइज स्टूडेंट नॉट टू गो फॉर इट। सर फर्क क्या है, कैसे है? इफ यू गो थ्रू, लाइफ टाइम वैलिडिटी है वैसे तो। एग्जाम ड्यूरेशन के बारे में समझ लेते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन करीबन 40 minutes होगा। We'll have total number of question as 30, passing is 70%. What type of questions would be there? Okay, the type of question which you will come across is single, multi-select question, drag and drop, fill in the blanks, that is what they call as gap filling, sort the code, fill the code. यानी कि एक ऐसा एग्जाम जिसमें कॉपी करने का कोई चांसेस नहीं है। You really need to be very quick. If you feel sir 30 question बस, this 30 questions are to be solved within 40 minutes. Passing ratio is 70%. There are no negative marking, but that does not mean you're going to just go away with that, because 70% passing ratio इन्होंने कहा है। So what is the syllabus is about? ये syllabus में क्या क्या है, किस तरह से है? Okay, so if you talk about syllabus, let me also take you there. Just a minute. Syllabus मैंने ready रखा है जैसे कि मैं आपको discussion में उसे दिखा पाऊँ. So just a minute. Or else you can also go through this particular thing. Since we are talking about the second certification, I'm just taking the policies coming into. So I'm just working on it. Just clicked on. This is a syllabus in detail to work with. As I said, do not take one, take the second one. So second currently live and active hai. What we have now, as you can see over here, you have 4 sections to work with. Computer fundamentals, जो 18% questions आपको वहां से आएंगे। कंट्रोल फ्लो कंडीशन, सर आई वांट टू नो डिटेल। इन सारे डिटेल्स को मैं अवेलेबल कर दूंगा। आई विल गिव यू अ लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन फ्रॉम वेयर आई विल बी सेंडिंग यू ऑल दिस। सो यू जस्ट नीड टू फिल अप अ फॉर्म। इन केस यू वांट इट नाउ, डोंट वरी, मैं क्यूआर दिखाऊंगा जिससे कि फॉर्म आपको डाउनलोड करने मिल जाएगा। नाउ जस्ट टू वर्क विद इस तरह के एग्जाम में क्या क्या डिटेल्स है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाय सेइंग फंडामेंटल, व्हाट आई मीन, questions related to interpreter, lexicals, syntax, semantics, keyword, यानी कि जिससे प्रोग्रामिंग होता है, उनके ऑपरेटर, वेरिएबल्स, लिटरल्स, working with different operators in Python. Going further to talk about basic input output, control flow with reference to if else, conditional statement, loops, loop related question, and then we come across the questions where we talk about data structure of Python. यहाँ पे ज़्यादा बात होगी in terms of how they work, how they operate, various output coming in, collection framework जो
पाइथन में भी अवेलेबल है, किस तरह से म्यूटेबिलिटी होता है, क्या डिफरेंस है, क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं. तो यू रियली नीड इन डेप्थ नॉलेज about technologies like data structure in Python, and then we'll be talking about functions and exceptions, where we'll be discussing overall thing, how the function works, what is a return क्या नया कर सकता है, as people who have already taken course with us knows this fact कि हम लोग ने lectures में और trainings में इस पे concentrate किया है. Then parameters versus argument, there are lot many things. Exception handling, किस तरह से exception होता है, build in hierarchy, how exception gets handled, and what to do. This is basically with reference to core of your Python knowledge. Once this certification is cracked, once you pass, then only you will be allowed to go for other certifications in the hierarchy. And that's the reason whenever we talk about this, we always show this basic example, which you can see behind me. So the logic is simple. You first need to crack this, then only you will be able to go other. हाँ, एक advantage भी है. If you have successfully passed, the course fees for this or the certification fees for this reduced to half. That's a new thing which they have done. Sir, ये सारी चीजें कौन दे रहा है? As you can see currently on my screen, this is given by Python Institute. This is currently one of the certification which are not only cost effective but industry is accepting. अब एक obvious question आता है, sir, I want to do, I can prepare. Okay, don't worry. With our basic Python course, you should be able to crack this exams very easily, because the core Python module covers all this thing. But before giving exam, I strongly advise there are mock tests which we generally conduct. उन mock tests को पहले खत्म करो. Once you reach to a point that mock test में you are getting 100%, then go for this. अच्छा sir, इसके लिए कहीं जाना पड़ेगा? Should we do something? Should we operate? Don't worry, I have answers for that. Now, when you talk about this registration process, you don't have to do much. इनका एक preparative टेस्ट है, मॉड्यूल है जो आपको यूज करना पड़ेगा. इफ यू कंप्लीट और 4 मॉड्यूल विच इज अ फ्री स्टडी मटेरियल विच यू कैन से, लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा वंस यू रजिस्टर. सो इसमें ये चारों मॉड्यूल और आपके टेस्ट देने के बाद वंस यू रीच टू 100%, दैट इज व्हाट वी से complete the final test. एक final test एक mock test है which will allow you to evaluate your own self. Question हर बार इन लोग change करते हैं. So if you think dumb से बस उससे it's not gonna work, they change it at a regular interval. ओके, सो करना क्या, मतलब जो स्टडी मॉड्यूल्स हैं इनके, वो स्टडी मॉड्यूल्स खत्म करने के बाद यू कैन गो एंड बाय वाउचर फ्रॉम देयर साइट. आई विल शो यू दिस प्रोसेस. वंस यू बाय द वाउचर, देन यू कैन हैव द वाउचर नंबर एंड देन टेक अ टेस्ट और एग्जाम एट होम. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स में मिथ है कि सर एग्जाम देने सेंटर में जाना पड़ेगा ना. एज पर फॉर देम इट इज नॉट दैट, बट इस एग्जाम में भी ट्रिक है. सर मतलब जैसे ही मैं बोलूं कि एग्जाम घर से देना है, हम में से आधे लोग स्माइल करेंगे क्योंकि कोविड ने और कोरोना ने एग्जाम का एक अलग ही तरीका हमको सिखा दिया. बट यहाँ पे माइंड यू, even when having in-home exam, you have an internet connection which is supposed to be stable. जरा भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ, आप एग्जाम से बाहर थ्रो कर दिए जाओगे. यू कैन नॉट अल्टर टैप, मतलब मैं कहीं से क्वेश्चन का आंसर निकालता हूं, सॉरी, you will not be able to do that. The moment you do alt tab, you will be out of exam straight away. You'll be thrown out. So security feature वैसे इन लोग ने रखे ना, तुम्हें webcam on नहीं रखना, ना तुम्हें ये करना. But yes, they monitor your keystroke, they monitor the multi-window functionality of your browser. So be very very careful when you give that. तो ठीक है सर, मतलब आप बोल रहे हो उस हिसाब से हम लोग को पहले सब मॉड्यूल्स खत्म करना है, एक मॉक टेस्ट फाइनल टेस्ट दे देना है, उसके बाद आपको ये वाउचर खरीदना है. This will allow you to select exam date, time according to your availability and according to what offers they are giving. Then आप घर बैठे ये टेस्ट ले सकते हो. अच्छा सर, सही है? सही नहीं है. There are few things. During exam, be very very careful. I would request, make sure that you have stable internet connection. अगर stable internet connection नहीं है तो आप बाहर आ जाओगे. Do not try to switch tab, because मैं already बोल चुका हूँ, टैप करोगे और टैप करोगे बाहर जाओगे. Be careful, very very careful. Then when you talk about pass and fail, ये आपको immediately on screen दिख जाएगा, आपको report analysis भी मिल जाएगा, और आप directly if you pass, which you definitely would be provided you work for it, तो सीधा आपको download certificate option आ जाएगा और वो एक patch मिल जाएगा which you can flaunt and you can tell that yes, now I'm a certified Python programmer. So ये तो basic programming या basic modules के लिए था. As we go ahead, if we tend to compare, because lot of student has this question कि सर अलग अलग मतलब क्या
क्या है, what is the difference we are doing, or what exactly difference we are talking about. So the difference what we have in this is each module as you go ahead with the certification, एक core Python है, दूसरा oops पे concentrate कर रहा है, तो तीसरा app building और बाकी की चीजों पे कर रहा है, making one thing obvious that every step which you take in a higher certification is going to be a bit difficult compared to the last one. But sir, इनका comparison, don't worry, I'll give you that. So as you can see on my screen, मैं इसके लिए PPT ही फायर कर देता हूँ जिससे मुझे नहीं, आप PPT देख पाओ अच्छे से. So this is a PPT format. Now इसमें let us try to understand what we have and how we are doing. The basic thing, as I said, this is basically what we cover in our course under the heading of Core Python. So Core Python talks about the first level of certification with us. Then जब full stack का बात करते हैं यार, we talk about full stack Python, वहां पे बाकी के certification हम लोग धीरे धीरे open करते जाते हैं. जैसे कि the second certification which you would take after completing CPEP is associate programmer. अब इसमें क्या है, इसमें मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस है. पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स और पैकेजेस है, जैसे कि डेट हो गया, रैंडम पैकेज हो गया एंड मच मोर. ये सारे पैकेजेस कैसे बनते हैं, क्या यूज होगा, मैथ मॉड्यूल कैसे यूज होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे तुम लोग डिस्कस करना शुरू करोगे. सो दैट मीन्स यू विल बी डिस्कसिंग मोर इन डिटेल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टफ. एज वी गो अहेड विद द सिस्टम, विल बी देन टॉकिंग अबाउट exceptions. Sir, this was covered over here. No. Now my concentration would be custom exception, how we can create, how we can work. So exception handling, troubleshooting, and creating own custom exception would be added in this certificate. Handling string, mind you, in this particular thing, string would be at much lighter level. But now the trick questions of string would come into picture. So depth would be greatly different. It's like understanding maths in standard 1 was plus minus multiplication division. Come back to engineering, come back to BSc, come back to 11-12. वही maths बड़ा हो गया, तो मेरे भाई ये बड़ा हो गया. So now we'll be having more trick problems in this. Be very, very careful. Another thing which gets added is object-oriented programming. That includes big terms, class, object, working with inheritance, polymorphism, abstraction. बड़े-बड़े words, जो भारी-भारी word हम लोग ने सीखे थे. That's the same thing which we'll be working with. Miscellaneous, we would be covering lot of small scale modules, their abilities, comparator, constructor overriding, जैसे छोटे छोटे topics जो यहाँ पे हम लोग discuss करना शुरू करेंगे. Once you are able to crack, इसका fees काफी heavy है. If you go back, the fees is somewhere around 295. If you clear this becomes half of what we are giving. This offer is not by me. This offer is simply given by the website itself. So if you pass, you'll be getting that particular option. So be very, very careful when you go through this. As you go further, as you operate further, when we are talking about this, once you complete this too, then you can have the professional certification. उसका syllabus wise दोनों certificate में syllabus तो एक ही है. But the difference is the depth. As the website clearly specifies, this time there will be more questions on implementation, correct the code, optimize the code when you talk about CPP1 or CPP2 certification. अब जब ये सारी बातें हो रही है तभी एक obvious question आता है, sir, what about Microsoft? I mean, Microsoft is also running the things. The yellow one which you are seeing, the bar which you are seeing, or the yellowing side, that yellow side is completely about working with Microsoft. तो यहाँ पे क्या होगा, किस तरह से है, किस तरह से चीजें चलेगी. तो लेट मी हेल्प यू ऑफ. तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का बात करोगे, व्हेन यू कैन गो थ्रू विद दिस, माइक्रोसॉफ्ट के पास क्या है, व्हाट एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट हैज, व्हाट एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट इज डूइंग. तो इस केस में जब माइक्रोसॉफ्ट का बात आता है, द येलो वन, इसमें क्या क्या है. So we have a basic operators data types as one section, which is 20 to 25% of the paper. Then control flow. So sir, it is parallel to this. Yes, it is parallel, pretty parallel. Perform input output section. Again, similar. Document and structure code. यहाँ पे coding standard नाम का एक चीज है. Since it's a Microsoft, they have a standard, they have a coding pattern. वो यहाँ पे इन्होंने add कर दिया है. Then troubleshooting, error handling, much similar to what we have done earlier. And then perform operation, and then as we say perform operation in modules and tools. तो अगर Microsoft का certification देखा जाए तो ये काफी हद तक CEP and CAP का combination की तरह देखा जा सकता है. हाँ, oops इसमें नहीं डाला गया, oops पूरी तरह से इसमें नहीं है. So but still
Sir, what you would suggest? Should we go for Microsoft or should we go for Python Institute? I would definitely go for Python Institute because this time, this kind of certificates will really give you boost. ये difficult है pass करने में. Duration ज़्यादा है, मगजमारी ज़्यादा है. Sir, can we see that also? Yes, definitely. So I'm just giving you more heads up on this. So people, just let me just help you off with this. So as I said, this is about test and all. So CAP अगर बात किया जाए तो ये करीबन 65 minutes का एग्जाम है. So this is a 65, 40 question, again 70% passing. सर एक क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम में फेल हुए तो विद पाइथन इंस्टीट्यूट यू कैन रीडू दैट टेस्ट इन 15 days. यानी कि एक बार फेल हुए अगर तो 15 दिन के बाद वही, यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा, बट यस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर operation, no, again, but after 15 days, not immediate. So as we are talking about, again 65 minutes, we work with other operations, and then there comes the Microsoft. So I'll be more concentrating on this right now. Introduction to programming using Python. ये एक foundation certification है Microsoft exams के तरफ से. So if you go with the details, this certification itself, one time, I again repeat, one time, would cost you, as we have given, 3696. That is around 4,000 roughly if you put into. Again, similar, you have to book a slot and then you can take this examination to work into picture. हाँ, इसमें एक option open हो जाता है that you can visit places which are Microsoft certified centers and then give this particular exam coming into picture. So this is obviously going to be more possible. If asked me, sir, क्या करना अक्लमंदी होगा? I would go for Python entry level certification first so that I get a confidence, I understand Python that way, and then I'll go for Python Institute certificates only rather than Microsoft. हाँ, कुछ Microsoft partners हैं industry में जो अब धीरे धीरे ये सर्टिफिकेशन कंपलसरी कर रहे हैं, दैट देयर प्रोग्रामर्स आर फोर्सफुली, और आई वुड से उन्हें बोला जा रहा है, दे हैव बीन कंपाइल्ड टू गिव दिस सर्टिफिकेशन. सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू गो विद दिस, बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू टेंड टू वर्क विद दिस. अब ये सब बात करते हुए एक क्वेश्चन वापस आ जाता है अपने पास. सर, शुड वी डू सर्टिफिकेशन, शुड वी कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोजेक्ट, फुल स्टैक या क्या? So the basic idea over here is very, very simple. Your knowledge would obviously matter and can be increased only using projects idea. यानी कि project implementation must है. अब project हर एक को करने मिले या internship हर एक को मिले necessary नहीं है. Then how will you showcase your ability? This is the best way. So you take a certificate, you clear a certificate, and you tell that person that yes, I am certified. Then there are very bright chances even to get internships. यानी कि आपका chances है internship मिलना भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. There are likely chances कि आपको internship मिले. Why? Because you are certified Python programmer. So I can have a trust. I can give you project modules. Sir, projects, certificates, final verdict. If you want to really work in industry, projects are must. But in order to get entry in industry, certifications are must. So I would say first do a basic level certificate, as we have already spoken about. Use it to get internships and project work. Update your resume with both, and then your dream job is not away. This is what we have. So I hope people are clear. People who are interested in knowing more can do one simple job. I'm just showing you a QR on a screen. You can scan this QR and you will get a form. You will get a form. ये जो QR अभी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इस QR को स्कैन कर लो, आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा. उस गूगल फॉर्म में आपके डिटेल दे दीजिए, जो भी रिसोर्सेस यानी कि सिलेबस, कैसे पढ़ना है, व्हाट इज अ स्ट्रेटजी, इसका एक छोटा सा नोट्स बना के रखा है मैंने, ये आपको ईमेल में और व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा. प्लस in coming weeks we are having several workshops on Python certifications, one day workshop on basic of Python. ये सारी चीजें और इन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन भी आपको इस पर्टिकुलर इसमें रजिस्टर करके मिल जाएगा. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, so that you can again click and register for that. The way we are looking at it is every week there'll be a workshop coming on Python, Java, Python related technology, or basic of coding. So again, I would request people to register on this particular link so that you will get updates and you will get more resources as we go. So I hope people enjoyed this and see you soon in workshop. I'm Panchal, signing off.